Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are doing really well today. I am Maham Lodi from Divisional Public School and Intermediate College, Lahore. Welcome to Lecture 7 of Mathematics for Class 3. As you already know, we have started Chapter 2, Number Operations. In Lecture 6, we covered the first operation, which was addition. We basically perform four number operations. We add the numbers, we subtract the numbers, we multiply and divide the numbers. Lecture 6 was all about addition, and Lecture 7 is going to be about subtraction. We have divided subtraction into two parts, which means we are going to cover subtraction in two lectures, Lecture 7 and Lecture 8. Part 1 comprises of page number 55 and page number 57 of your countdown 3. Grab your pencils, your notebooks, and your countdown. Let's get started. Before we start today's lecture, let's have a quick review of lecture 6. पिछले लेक्चर में हमने 4 डिजिट नंबर्स को ऐड किया था without regrouping and with regrouping. और इसके अलावा we already understood the concept of solving real life problem involving addition. Contents of today's lecture are going to be introduction of subtraction. इंट्रोडक्शन में हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे कि सब्ट्रैक्शन है क्या. Recalling previous knowledge and common mistakes. सब्ट्रैक्शन के बारे में जो बातें आप पहले से जानते हैं उनको रिवाइज करेंगे और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं उनको भी एक दफ़ा स्टडी करेंगे. Then we will learn about subtraction of 4-digit numbers without regrouping, which means यहाँ पर कोई कैरी नहीं लिया जाएगा, कुछ बोरो नहीं किया जाएगा. Subtraction with regrouping. Subtraction with regrouping is divided into further two parts. The first one is converting tens into ones, and the other one is converting hundreds into tens. Introduction of subtraction. बिल्कुल सिंपल सी बात, जब हम दो नंबर्स को ऐड करें तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को शामिल कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं. और सब्ट्रैक्शन के अंदर हम ऐसा ऑपरेशन करते हैं जिसमें हम ऑलरेडी मौजूद तमाम चीज़ों में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देते हैं. So subtraction is an arithmetic operation which shows removal of objects from a collection. Let's have an example. I have 5 pencils. I give 2 pencils to my sister, so now I am left with 3 pencils. अगर मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं और उनमें से 2 पेंसिल्स मैं अपनी सिस्टर को दे दूं, तो मेरे पास बाकी 3 पेंसिल्स बचेंगी. Mathematically, we can say that 5 pencils minus 2 pencils leaves 3 pencils. Or in vertical form, we can write it like this. So subtraction का simple concept क्या हुआ कि आपके पास जो total collection है उस collection में से कुछ part remove कर दिया गया हो, तो इसका मतलब है कि वो कुछ part subtract कर दिया गया है. कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो सब्ट्रैक्शन के हवाले से आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. नंबर 1, subtraction is an arithmetic operation which shows removal of objects from collection. इस स्टेटमेंट से आपको MCQs या fill in the blanks की फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है. The result of subtraction is called difference. ये भी आपको MCQs की फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है. And the process of subtraction is signified by
a माइनस साइन। ये छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके काम आएंगे। रिकॉलिंग प्रीवियस नॉलेज। क्लास 2 में आपने 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। अब कुछ सब्ट्रैक्शन के रूल्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। इन क्लास 2 you have already learned always start from the right। ये रूल एडिशन पर भी अप्लाई हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन पर भी अप्लाई होता है कि आपने वंस कॉलम से स्टार्ट करना होता है एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। Subtract the numbers in ones place first, then tens, then hundreds, and lastly the thousands will be subtracted. While subtracting in vertical form, we always write bigger number at the top and smaller number at the bottom. एडिशन में आप किसी भी नंबर को वर्टिकल फॉर्म में लिखते हुए ऊपर भी लिख सकते हो और नीचे भी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना होता है कि हमेशा बिगर नंबर को टॉप पे रखना है और स्मॉलर नंबर को बॉटम पे, अदरवाइज आपकी सब्ट्रैक्शन गलत हो जाएगी। एंड लास्ट वन, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट बॉटम नंबर फ्रॉम टॉप। सिंपल कॉन्सेप्ट में भी आपको बताया था कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम किसी कलेक्शन से एक पार्ट को रिमूव करते हैं। अब हम जब कलेक्शन में से पार्ट को रिमूव कर रहे हैं तो नंबर्स के लिहाज से भी बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर रिमूव हो रहा है और स्मॉलर नंबर को हमने नीचे लिखा हुआ है, इसलिए बॉटम नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टॉप नंबर। लाइक दिस वन। यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में 69 इज द बिगर नंबर एंड 42 इज द स्मॉलर नंबर। इन दो नंबर्स में 69 को टॉप पर रखा है और 42 को बॉटम पे। सिमिलरली अगर 3 डिजिट नंबर हो तो 246 इज द बिगर नंबर, इट्स प्लेस्ड ऑन द टॉप, and 104 is the smaller number, so it is placed on the bottom. In case if the top number is not enough, which means it is smaller, so we make it bigger by borrowing from the number on the left. Last example में देखिए, आपके पास दो digits हैं 51 which are placed at the top and 28 is placed on the bottom. जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम वंस कॉलम से स्टार्ट करेंगे और वंस कॉलम में टॉप पर नंबर 1 है, 1 इज स्मॉलर एंड द बॉटम नंबर 8 इज बिगर। ऐसे केस में नेक्स्ट कॉलम में से जो लेफ्ट पर है विच इज द टेंस कॉलम, वहां से एक नंबर बोरो कर लिया जाता है विच मेक्स इट 11। कॉमन मिस्टेक्स while subtracting. While subtracting, order of numbers matters a lot. Always subtract bottom number from the top number. इस रूल को अभी पहले भी डिस्कस किया है और इसको बार बार एम्फेसिस करने का मकसद ये है कि ये गलती अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कर दिया करते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। 23 minus 18। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका रिजल्ट लिखा हुआ है 15 which is wrong. Why is it wrong? We start subtracting from the ones column और ones column में टॉप पर डिजिट है 3, बॉटम पे डिजिट है 8। बिगर नंबर शुड बी एट द टॉप और अगर ऐसा ना हो तो हम टेंस कॉलम से बोरो कर लेते हैं। इस मिस्टेक को आप यूं समझ लीजिए, जब हम दो नंबर्स को ऐड करें तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। लाइक 5 plus 3 is 8 and 3 plus 5 is also 8. But when we subtract, 8 minus 3 is 5, but 3 minus 8 is not possible. This is the correct way. 3 is the smaller number and it is on the top, so it cannot subtract 8 like this. हम 2 में से 1 बोरो करेंगे तो वो उसको 13 बना देगा and then it will subtract 8.
Here is another example, which is wrong. This is the correct way. Subtraction of 4-digit numbers without regrouping. Without regrouping है तो इसका मतलब इसमें कहीं से कोई carry या borrow नहीं किया जाएगा. Let's start off. Let's take this example. We have two numbers, 2469, and we have to subtract it with 1042. आप देख सकते हैं कि जो बिगर नंबर है उसको टॉप पर रखा है और स्मॉलर नंबर को बॉटम पर. Let's start off with the ones column. First step is subtract the ones. This is pretty simple. 9 ones minus 2 ones gives us 7 ones. For next step, 6 tens minus 4 tens gives us 2 tens. For third step, subtract the hundreds. 4 hundreds minus 0 hundreds gives us 4 hundreds. And for the last step, 2000 minus 1000 equals 1000. That was pretty simple. Let's move on to a difficult level. Subtraction with regrouping, converting tens into ones. Let's have this example. We have to subtract two numbers, 3451 with 1328. As you know that we have to start from the ones column, you can see in order to subtract the ones, the top number should be bigger. 8 cannot be subtracted from 1. Why? Because 1 is smaller and 8 is bigger. We always subtract bottom number from the top number. So we have to convert 1 tens into 10 ones and then add 1. It means 1 is smaller in the ones column, so we have to borrow 1 10 from the tens column. When 1 is borrowed from the tens column, it becomes 10 ones. और वहाँ पहले से एक 1 मौजूद है, तो वो बन जाएगा 11 ones. Now your columns will look like this. Ones column has 11 ones at the top and 8 ones at the bottom, so we can subtract it. 11 ones minus 8 ones gives us 3 ones. अब हमने tens में से 1 borrow किया था, तो हमारे पास यहाँ पे 4 पीछे रह गया, क्योंकि पहले वहाँ पे 5 था, उसमें से 1 borrow करने की वजह से वहाँ से निकल गया. तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 tens हैं और bottom पे 2 tens हैं. Top number is bigger, so we can subtract it. 4 tens minus 2 tens gives us 2 tens. Step 3, subtract the hundreds. यहाँ पे भी आप देखें तो टॉप पे आपके पास 4 hundreds हैं और बॉटम पर 3 hundreds हैं. You can easily subtract it, and 4 hundreds minus 3 hundreds gives us 1 hundreds. For the last step, we have to subtract the thousands. We have 3000 minus 1000. ये भी सिंपल सिचुएशन है. यहाँ पर भी टॉप नंबर बिगर है और स्मॉलर नंबर बॉटम पर है. So we get 2000. Our final answer is 2123. इस रीग्रुपिंग के अंदर आपने सिर्फ टेंस को वंस में कन्वर्ट किया है.
Let's get you some practice now. You have to do the sums at page number 55. ये वाले क्वेश्चंस आपने बुक पर ही सॉल्व करने हैं। यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. They require you to subtract two numbers by converting tens into ones. Subtraction with regrouping, converting hundreds into tens. अब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। पहले हमने टेंस को वंस में कन्वर्ट किया था, अब हम हंड्रेड्स को टेंस में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमें दो दफ़ा बोरो करना होगा नंबर। लेट्स हैव दिस एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में जब हम वंस कॉलम से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप देख लें, टॉप पर है 1 विच इज़ स्मॉलर और बॉटम पर है 5 which is bigger. In order to subtract the ones, 5 cannot be subtracted from ones, so we convert 1 10 from 10 ones and add 1. जैसे हमने पहले किया वैसे ही हम टेंस कॉलम से 1 डिजिट को बोरो करेंगे तो हमारे पास वंस कॉलम में आने पर वो 10 वंस बन जाएगा और यहाँ ऑलरेडी एक 1 मौजूद है तो वो ऐड होके 11 वंस हो जाएगा, like so. When we subtract them, we have 11 ones minus 5 ones, which gives us 6 ones. Tens column पे हमने अब 4 minus 7 करना है. Look closely. यहाँ हमारे पास situation change हो गई है. अब tens column में भी top number smaller है और bottom number bigger है. So 7 cannot be subtracted from 4. We convert 100 into 10 ones and then add 4 into it. What does it mean? Tens कॉलम में हमारे पास स्मॉलर नंबर है इसलिए हम हंड्रेड्स कॉलम से 1 कैरी लेंगे। हंड्रेड्स कॉलम के अंदर वो 100 है लेकिन जब वो टेंस कॉलम में आएगा तो वो 10 टेंस बन जाएगा। 100 is equal to 10 tens. जब वो टेंस कॉलम में आ गया तो अब वो 10 टेंस बन चुका है और वहाँ 4 ऑलरेडी मौजूद है which will be added to it. So 10 tens plus 4 tens will give us 14 tens. Now we can subtract it. 14 tens minus 7 tens is equal to 7 tens. For third step, we have to subtract the hundreds. यहाँ हमारे पास 400 में से 1 कैरी चला गया था तो पीछे अब हमारे पास 300s हैं. 300s can subtract 100s which gives us 200s. And lastly, we have to subtract the thousands. 3000s minus 1000 gives us 2000. Let's have some practice. You will do question number 9 on page 57. इस क्वेश्चन को आपने बुक पर ही सॉल्व करना है। यहाँ पे आपने सब क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट करना है और ज़्यादातर क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, आर अबाउट कन्वर्टिंग हंड्रेड्स, जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल की है। If you have any queries regarding this lecture, you can comment down below. Thank you.